So guys, thumbs up, thumbs down below, share and subscribe and slap a like on the bell icon to get my future videos updates regularly. दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। बेल आइकन की घंटी पे क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे, है ना। तो दोस्तों जैसा आपको मालूम है ना, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात करी थी कैसे हमको लड़कियों को अप्रोच करना है अपने आई कांटेक्ट, अपनी स्माइल और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, है ना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हमें लड़कियों को हमने सेड्यूस कैसे करना है ना। और अगर वो हम उसकी तरफ स्माइल करते हैं और वो भी स्माइल करती है तो हमको कैसे जाके उससे बात करनी है, क्या हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स रहेगी, है ना। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। So guys, in my previous videos, I spoke, volumes about how to use your eye contact, your flirtatious smile, and your body language, you know, to approach a woman, and if you manage to seduce a girl, so how should be your presentation skills? The presentation skills will decide your fate. So it is very important phenomena. So today I will be discussing about the presentation skills required. Okay, guys. तो दोस्तों हम बात करते हैं भाई आज के वीडियो के बारे में, है ना। जैसे पिछली वीडियोस में हमने, आपको मालूम है मैं वीडियोस जैसे बनाता हूँ फ्लर्टिंग और डेटिंग टिप्स पे, है ना। तो मैं पहले हिंदी में बनाऊंगा आज का वीडियो, है ना। फिर मैं इंग्लिश में वही चीज़ बताऊंगा, है ना। तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में वीडियो बनेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी होगी ना। सो गाइज लाइक आई मेक वीडियोज ऑन फ्लर्टिंग एंड डेटिंग टिप्स, and I make videos in both the languages, Hindi and English. So first I'll be speaking in Hindi, the same content, then I'll be speaking in English. So I hope you will get few tips and help. It will help you to learn spoken English very well. So guys, let's get started. First we'll talk in Hindi. तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बात कर ली है ना, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और स्माइल को यूज़ करके कैसे हम अप्रोच करना है लड़कियों का, है ना। अब बात आती है भाई कैसे आपको प्रेजेंट करना है लड़की के सामने, है ना। तो 90% जो लड़के होंगे ना वो एक ही गलती करेंगे। वो जाएंगे लड़की से मिलने के लिए, है ना, और इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि भाई हम आपको आधे घंटे से देख रहे हैं, हम आपको एक हफ्ते से देख रहे हैं या कई महीनों से आपको ताड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, है ना। और जो बात बोलनी है टू द पॉइंट वो नहीं बोलेंगे, है ना। और आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा यार, आप जिस लड़की को आप अप्रोच कर रहे हो ना, भले ही वो भी हंसी आपको देख के, इसका मतलब नहीं है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई, है ना। तो ये आपको पहले से जानती हो, आप तो उसके लिए एक स्ट्रेंजर ही हो ना। और ये भी हो सकता है कि भाई वो उसके आस पड़ोस में कोई रिश्तेदार हो या फिर उसके दोस्त हो या दुनिया देख रही है तो उसको कंफर्टेबल नहीं करेगी, इतना कंफर्टेबल नहीं होगी आपसे बात करने में, है ना, पब्लिक में। तो आपको सबसे पहले तो यार बेशक मतलब आपको उसे अप्रोच करना है ना, उसकी तारीफ करनी है। आप उसकी पोएट्री, कोई भी अपनी हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप उसको पोएट्री में उसकी तारीफ कर सकते हो, आपकी बेइंतहा खूबसूरत हो आप, है ना। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, ऐसे इस तरीके से आपको अप्रोच करना है उसको। उसको बोलना है कि भाई मैं ऐसे ही रैंडमली आ गया आपके पास और ना मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, आप इतनी खूबसूरत हो, मलिकाए, जो भी आपको हुस्न, जो भी जो भी आपको मतलब तारीफ करनी आती है लड़कियों की, अपने तरीके से आप तारीफ करो उसकी, है ना। लेकिन ये ध्यान रहे कि हाँ भाई जो आपका कन्वर्सेशन है ना, जो आप बात कर रहे हो वो बहुत लिमिटेड बात करो ना, ज़्यादा बात मत करो पहली बार में, है ना। और कोशिश करो कि उसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन निकाल सको उतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने उसका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी या उसके बारे में आपने जांच ही नहीं करी तो फिर नेक्स्ट टाइम कैसे मिलोगे उससे, है ना। तो अगर आप लक्की हो, उसका अगर फ़ोन नंबर मिल जाता है तो फिर आप आराम से फ़ोन पे बात कर सकते हो ना, घंटों जो भी आपको बात करनी है। हाँ, और अगर आपको उसका फ़ोन नंबर मिलता है तो थोड़ा पेशेंस भी रखना है, ऐसा नहीं कि फ़ोन नंबर दे दिया तो आपको कल ही मिल जाएगी, है ना। तो लड़कियाँ, भले ही आपका नंबर दे दिया उसने आपको, लेकिन वो आपको उसका भरोसा जीतना पड़ेगा तभी आपको वो मिलेगी, है ना। तो फ़ोन पे उससे एक तो रिस्पेक्ट से बात करो, अच्छे से बात करो, है ना। और कोशिश करो कि आप उसको रात को कॉल करो, है ना, क्योंकि रात को लड़कियां, एक तो क्या आजकल लड़कियां मतलब वर्किंग लेडी भी बहुत हो गई है ना, दिन में जॉब्स भी रहती हैं किसी की, क्या पता कोई कॉलेज में है, स्कूल्स में, है ना। दिन में बहुत स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है। और आपके लिए भी है ना वो भाई मेंटल, और रात को क्या मेंटल और इमोशनल पीस भी रहता है ना माइंड में, आदमी दिन भर की थकावट से दूर रहता है ना। अपना खाना वाना खाया अपना रात को, फिर उसे फ़ोन किया आपने, है ना, तो वो भी थोड़ी रिलैक्स होगी रात को ना। और साइंटिफिकली भी चीज़ें प्रूवन है कि भाई लोग मतलब रोमांटिकली और सेक्सुअली भी ज़्यादा एक्टिविटी रहते हैं रात को। तो अच्छा है ना, रात को फ़ोन करो आप उसे।
आपने उसको जब रात को फ़ोन किया ना, तो फिर धीरे धीरे उसका आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। फिर जो आपको बातें करनी है करो अपना अपने तरीके से, और कोशिश करो कि फिर वो आपसे डेट पे मिले, है ना। तो अच्छी अच्छी बातें करो उससे, है ना, और रिस्पेक्ट से बात करो। तो अगर आपको फिर वो डेट पे बुलाती है कभी, है ना, बाहर मिलने के लिए बुलाती है, तो आपने क्या करना है उसको फिर, जब पहली बार मिलने जाओगे ना, एक तो नहा धो के जाओ, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के जाओ, है ना। और दूसरा ये है कि आप कपड़े वपड़े पहन के जब जाओगे अच्छे से मिलने के लिए, है ना, उससे, तो कोई महंगे तोहफे मत लेके जाओ पहली बार में उसके लिए, है ना। आप एक गुलदस्ता लेके जा सकते हो गुलाब का ना, 4-5 गुलाब बहुत है उसमें, हो गए। कुछ चॉकलेट्स भी ले जा सकते हो, चॉकलेट्स भी लड़कियों को पसंद होती है ना। और मैं नहीं बोलूँगा बड़े बड़े जो बुके होते हैं ना, इसमें 1000-1000, 500-500 रोजेज रहते हैं, या 100-100 रोजेज रहते हैं, वो मत लेके जाओ यार। वो शादी की सालगिरह थोड़ी ना है, उसमें लेके जाते हैं वो, है ना। और ऐसा भी मत करना कि भाई अब बोल दिया तो कि एक ही गुलाब उठा के लेके चले गए, उसको लगेगा भाई ये तो कहीं से चोरी करके लाया है। तो ऐसा मत करना, है ना। अच्छे से, ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देनी है, बस गुलाब का गुलदस्ता दे दो और चॉकलेट्स दे दो, बहुत है ना, पहली बार मिलने जा रहे हो उससे, है ना। और मतलब लड़की का फिर ट्रस्ट जीतने की कोशिश करो फ़ोन पे, है ना। तो जितना आप ट्रस्ट जीतोगे उतना ही चांसेस ज़्यादा है कि वो आपको मिलेगी। फिर अगर वो मिलने के लिए एग्री होती है तो फिर आप मिलने जाओगे उससे। तो फिर आपको, जब, तो मिलने की जो जगह भी है ना, वो उसी को डिसाइड करने दो, है ना। अब कई कई लड़कियों को पसंद होता है भाई कॉफ़ी शॉप में मिलना, है ना, किसी को रेस्टोरेंट्स में, या कोई कोई लड़कियों को तो मतलब बार्स में, डिस्कोज में भी मिलना पसंद होता है ना। और मर्जी है उसकी भाई, वो कई कई लड़कियों को लॉन्ग ड्राइव पे जाना भी पसंद होता है ना। और जैसे वो अगर आपके पास अपनी कार है, मोटर बाइक है ना, उसमें आप लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जा सकते हो ना, जाते जाते आप बात कर सकते हो उससे। और अगर आपके पास अपना अपना व्हीकल नहीं है ना, तो आप उस पर भी जा सकते हो, बस ट्रेन वगैरह में, है ना। और कोई कोई लड़की को तो मतलब पार्क जो होते हैं ना, बहुत पीसफुल जगह भी पसंद होती है, जैसे पब्लिक गार्डन में, पार्क में भी मिल सकती है ना वो। हाँ, और आपके पास अगर अपना व्हीकल, जैसे मैंने बताया ना, नहीं भी है ना अपना व्हीकल, तो आजकल तो वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा हो चुका है ना, बस ट्रेन हर कस्बे शहर में चलती हैं, है ना। शहर के एक कोने से दूसरे कोने में चलती हैं। तो अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो तो एक कोने से दूसरे कोने में ही बस ट्रेन में जाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, है ना। नहीं तो अगर आप आसपास के कस्बे गांव में भी जा सकते हो बस ट्रेन में, मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस है ना। और जब आप ट्रेन बस में होते हो तो आप बात कर सकते हो, है ना, वो भी एक बहुत अच्छी डेट हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आराम से आप बात कर सकते हो, है ना। मेरे को भी एक बार, एक मैं अपने गाँव गया था तो एक लड़की पसंद आई, है ना। तो मैं उससे बात करने के लिए गया, उसने मुझे बोला कि भाई, मेरा गांव एक्चुअली दिल्ली से 2-3 घंटे के रास्ते पे है, तो उसने मुझे बोला यार यहाँ तो हम लोगों को सब जानते हैं ना, तुम भी बदनाम हो जाओगे खामखा, मैं भी बदनाम हो जाऊंगी, तुमसे बात करी यहाँ तो हम लोग एक काम करते हैं। बोलती है मेरी मेरी फ्रेंड रहती है दिल्ली में, मुझे उसको कुछ सामान देना है, तो हम लोग दिल्ली चलते हैं और सेम डे हम लोग वापस आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा है ये भी, कि हम जाते जाते बात करते करते जाएंगे, बात करते करते आ जाएंगे, फिर तुम अपने घर, मैं अपने घर। मैंने कहा हाँ यार, ये सही आइडिया है। तो उससे मुझको ये सजेशन मिला, है ना। तो हम लोग गए उस टाइम पे, फिर आए, बात करी उससे, है ना। वो अलग बात है कि बाद में हमारी कुछ आगे बात नहीं बन पाई, है ना। और पर यह है कि बात तो होगी ना, फर्स्ट डेट अच्छी रही। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ये भी तरीके होते हैं ना। आप देखो, अगर आप पहली बार जब मिलने जा रहे हो ना उससे, तो आपको बनावटी और जो बोलते हैं ना भाई डेटिंग कोचेज वगैरह हो गए दुनिया भर के, उनसे आप उनकी पिकअप लाइन देंगे आपको, भाई ये बोलना है वो बोलना है, चीज़ी पिकअप लाइंस, वो सब नहीं बोलना है आपको। जैसा आपकी पर्सनालिटी है ना, वैसा बन के रहना है आपको, है ना। आपकी भी खुद की एक वो होगी ना, औकात बोलते हैं जिसको, पर्सनालिटी मतलब, तो वो आपको मेंटेन करके चलनी है ना। तो अब लड़की आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हुई है ना। अब वो पर्सनालिटी कैसी भी हो सकती है, तो वो आपको, जैसे आप रियल लाइफ में हो ना, आज तक जिंदगी में जो भी आपका स्वभाव है, तो आप नेचुरल होके जाओ, है ना। सबसे जरूरी चीज़ है कि भाई झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, जो भी बोलना है ना, सच्चे बन के जाओगे, चांसेस है कि आपको वो एक्सेप्ट करेंगे ना। बनावटी बन के दूसरों की कॉपी करी हुई लाइन्स इधर उधर की बोलोगे, तो हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस हो जाए, लेकिन बाद में उसको अजीब सा लगेगा, फिर छोड़ देगी। तो ऐसे करके आपको बात करनी है ना। और कोशिश करो कि जब बात करो ना, तो लड़की को बोलने का ज़्यादा मौका दो, आप कम बोलो, है ना। जैसे कि आपने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो आपके क्वेश्चन 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाने चाहिए, है ना। और लड़की उस चीज़ का जो आंसर दे रही है, तो उसको लेने दो टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, पूरा दिन ले रही है, लेने दो उसको ना। तो लड़कियों को, जैसे मैंने बताया ना, जो लोग सुनना पसंद करते हैं, गुड लिसनर्स, वो लड़के ज़्यादा पसंद होते हैं। तो गुड लिसनर बनो भाई, है ना। और आपको फिर दूसरी चीज़ क्या करनी है, टच बैरियर को तोड़ना है किसी भी तरीके से, है ना। क्योंकि मतलब ये भी एक साइंटिफिकली चीज़ प्रूवन है, मतलब आप देखो ना, किसी को टच करते हो, अपने माँ बाप, भाई बहन,
रिश्तेदार है ना, कजन सिस्टर भाई, जो भी आप उनके साथ खेलते उठते बैठते हो दोस्त है ना, जितना आप टच करोगे उतना बॉन्डिंग होती है ना आपके बीच में, क्रिएट होती है। इवन पेट्स पालते हो आप, कुत्ते बिल्ली है ना, गाय भैंस, तो जिनको जितना छूओगे उतना आप दोनों की दोस्ती, भरोसा करोगे ना एक दूसरे पे। तो टच बैरियर तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग बोलेंगे कि यार पहली बार ही में मिलने जा रहे हैं लड़की से तो टच करें, तो भाई पहली बार में आप नहीं कर सकते तो दूसरी तीसरी डेट पे करो है ना। अब लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उससे ज़्यादा वेट करो है ना, फिर हो सकता है लड़की आप से निकल भी जाए कहीं आपके। तो मेन चीज़ है कैसे भी करके आपको अब टच करने का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीजी से उसके मतलब प्राइवेट पार्ट्स पे और इधर उधर टच कर रहे हो ना, फिर मुझे बोलोगे यार आपने तो बोला था टची बनने के लिए। भाई भाई ऐसा नहीं बोला मैंने, टची ऐसा करोगे तो आप अरेस्ट हो जाओगे। ये सब गैर कानूनी गतिविधियां हैं। टच वच करना मतलब आपने गलत चीज़ पे टच कर लिया ना, हो सकता है वो बुरा बहुत मान जाए, आपको गुंडों उंडों से पिटवा दे, अरेस्ट करवा दे। तो भाई टच करने का भी तरीका होता है, सलीके से टच करने का है ना, और तमीज से है ना। तो आपको क्या है, तरीके मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको टच उसको। आप आपको वो कोई आप उसको कोई जोक सुना सकते हो, अच्छा है ना, वो हंसेगी तो आप उसको एक ताली दे सकते हो, हाई फाइव बोलते हैं ना जिसे, वो दे सकते हो। फिर आप अगर उसको पुश कर सकते हो सकता है वो भी फिर दोबारा से आपको वो भी पुश करते, तो आपकी दोस्ती हो जाएगी ना, बॉन्डिंग हो जाएगी, आप पे भरोसा करेगी, आपके कंधे पे टच कर सकते हो। तो धीरे धीरे है ना, फिर आप उसकी जुल्फे, कई बार देखा होगा लड़कियों की आंखों पे आ जाती हैं, कभी कभी जानबूझ के भी लाती हैं, पर वो जुल्फे आ जाती हैं आंखों के सामने, तो वो हटा के पीछे पीछे कानों के पीछे रख सकते हो, खेल सकते हो उसके बालों से है ना। तो वो ऐसा उसको लगना नहीं चाहिए गलती से आप यहाँ छू दो गर्दन के पास है ना, नेक रीजन, ये बहुत सेक्सुअली एक्टिवेट कर देता है लड़कियों को ना, सेक्सुअली अराउज कर देता है। ये एक एरिया, सेंसिटिव एरिया होता है नेक रीजन का। तो अगर वो आपने यहाँ टच करा उसको है ना, अगर उसको बुरा मान गई ना तो फिर आगे मत करो है ना, उसके हिसाब से चलो। अगर उसको नहीं बुरा लगा तो आप टच करते जाओ ना, खेलते जाओ। फिर तो क्या, आप उसके हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ना भी एक रोमांटिक चीज़ होती है बहुत ज़्यादा लड़की की, आपने अगर हाथ पकड़ लिया तो। फिर उसके आपने अगर हाथ पकड़ लिया ना, तो फिर तो आपको नहीं रोकती है, तो फिर धीरे धीरे उसकी आर्म्स के ऊपर यहाँ यहाँ टच कर सकते हो ना। फिर तो कोई लिमिट नहीं है भाई, आप अपनी तीसरी चौथी पांचवी छठी डेट पे उसकी थाइज वगैरह पे टच करना स्टार्ट कर दो है ना। फिर वो तो कुछ दिन की बात है, हो सकता है आपकी फिर वो गर्लफ्रेंड ही बन जाए है ना। फिर आपको अगर आप लक्की हो तो आपको फिर वो खुद ही किस कर दे आपको है ना, नहीं भी करती है तो आप किस कर सकते हो उसको है ना। तो ऐसे करके आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी वो है ना। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स का ही कमाल है, जिससे कि आप उसको अप्रोच कर सकते हो ना अच्छे से। तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना है ना गाइस। अब मैं यही वीडियो आपको मैं इंग्लिश में बताऊंगा है ना, मुझे कमेंट करके बताना इस वीडियो के बाद कैसा लगा है ना। आपको फिर इंग्लिश सीखने, इंग्लिश भी तो सीखनी है, स्पोकन टिप्स तो मैं दे ही रहा हूँ फ्री में। चलो अब हम इंग्लिश में बात करते हैं, ओके। So guys, like in my previous video, I spoke volumes about how to use your eye contact, your flirtatious smile, and of course your body language to your advantage in order to approach a girl. So suppose you manage to, seduce a girl you were eyeing. So the next step would be to, approach her confidently and use your presentation skills, to your advantage. The presentation skills is the most important thing in anybody's armory. It's a most important weapon in your armory, I must say it like that. So 90% of the guys will fail here. What they will do, is, they will go up to a girl, and talk to her, those they will waste their time talking unnecessary things. They will go up to her and they will tell her that they have been, looking her for the past say half an hour, or they've been noticing her for few hours, or maybe few weeks, or even months. So guys, you don't have to, waste your time talking unnecessary things. Instead, what you can do is, approach her confidently, and you can even use your poetry and prose to your advantage. Like you can say that you look quite radiant and you are so irresistible, and I just came randomly here, because I couldn't resist myself. So if that way, the girl will be impressed by you. At the same time, you don't have to you know at the same time you have to make sure that your conversation is very brief, because at the end of the day, you are mere a stranger to her, and people don't like to communicate with strangers a lot more. So even, girl with a girl you are eyeing might be wary of her, she might be wary of her friends or relatives, watching her talking to you. So try to extract, maximum amount of information
as much as information you can extract within a given period of time. And if you are lucky, lucky enough to exchange her phone number, then you can talk anything on phone. So okay, so the next step would be, if you manage to get her phone number, always try to call her at night time. Even it has been scientifically proven, those guys who call girls at night time, are more have more success rate than the guys, who are calling girls randomly. So at the same time, when you speak to her over phone, make sure you are respectful, and have a little patience, because she might not meet you the next day. For girls, it is very important that the guy who they are meeting, they should feel that actually they want a guy to be trustworthy. So try to win over her trust, as much as possible, over over decent phone calls. So if she agrees to meet you on a date, so make sure that you are properly dressed, and and don't give those expensive gifts to her on the first date. You can give her a bunch of roses and few chocolates, but don't give her those expensive bouquets, which are like hundreds of roses. Those are meant to be given at wedding, or other anniversaries. So then what you have to do is try to meet a girl. If she agrees to meet you, the meeting place should be decided. Give that girl a chance to decide the place where you both guys gonna meet. So because some girls like to meet guys on, I mean, they like to meet guys in coffee shops, bars, discos, and restaurants. But at the same time, some girls like few quieter places, like parks, gardens, botanical gardens, even some resorts near beaches, or even the resort on silent rivers. These days, even modern girls like to go on for a long drive on their first date. So if you are having your personal vehicle like car or motorcycle, then you can think about it. Even these days, public transport is quite robust. You can even travel to a nearby town or location, from your native place. So and while traveling in a bus or a train, you can have a decent conversation. Even I had one such romantic and beautiful experience. When I visited my village, which is hardly like 2 or 3 hours journey from New Delhi. So I happened to meet a girl there, and when I started to interact with her, she told me that there are a lot every this is a very small place, and everyone knows here everyone. So it is not good for her image to talk to you in public. So she only told me that, yeah, we can travel to New Delhi by train, and come back the same day. So while we are traveling in a journey, we can have a decent interaction. And indeed, it was a decent experience for me. That is another thing, that our relation didn't materialize after that. But yeah, it was kind of a good suggestion from her. So even you can do like this. Okay, you know and then when the day comes, when you have to meet her on the first date, try to be yourself and be confident enough to have a decent interaction with her, and at the same time, uh, actually, girls like guys, who are good listener. So you should, when you ask her certain types of questions, which are small in volume, and the answer which she will tell you, I mean, it should be a lengthy one. For example, if you ask her a question, your question should end within a minute. And when she answer those certain types of questions, her answer could go on and on, like for 15 or 30 minutes, or even more. So that is the way to approach, and interact with the girl. At the same time, you should be yourself, and you shouldn't use those cheesy and pick up lines to impress her, because
it could be, against your personality, and at the end of the day, you can, no matter how much you try, you only impress a girl with your personality. So just be yourself, don't try to, use those pickup lines like I said, and from that, uh, from some dating or, pickup artist, so try to be yourself and confident enough to, face her, and like I said, you should concentrate more on, how to get rid of that touch barrier as soon as possible, because again it has been scientifically proven that, the touch is very important, phenomena to bring, which bring trust within two individuals. It doesn't matter, the individual is your mother, father, your brothers and sisters or siblings, even, your pets. So the more you touch a person, the more confidence, I mean, the more compatible he becomes to you. So and at the same time, when I tell that you should be touchy, by being touchy, you don't mean that, you touch her on the boobs and spank on her ass, and try to touch her private parts. No, 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 guys. I'm totally against this, Don't ever try this with anyone, otherwise you might get arrested. It is against law, and, you might get beaten up with the goons, and uh, the girl eventually you the girl eventually, you are eyeing, might dump you at the same point. So, there are other procedures and tips, trips, and I mean tricks, which I'll discuss with you. Instead, you can, when you touch a girl, you should find excuses and reasons to touch her. Those reasons and excuses could be like, you can crack some funny jokes, and if she laughs, then you can just give her a high five. Even you can, push her gently, and then she might reciprocate. So even you can pat on her shoulder, so these kind of acts will improve, as a person, and you will grow in confidence. At the same time, the girl will be more comfortable, and now she will trust you more. So at the end of the day, girls like the more trustworthy guys. So till the time you don't win her trust, so you won't be able to win her heart. So try to win her trust and heart. So this is the way to approach. Okay, you can even, play with her, by being touchy. You can even play with her hair, and often you must have seen that girls hair are often falling over her eyes. So you can, you can take those hair, and, play with, while playing with those hair, you can put those hair behind her ears. In the process, you can even touch the neck region area accidentally. Okay, so because, this neck region is very sensitive, and it she might, get sexually aroused. So then you can even hold, if she stops you or even oppose, and repel, then you should stop then and there. But if she doesn't opposes, then you can hold her hand. It's again a very romantic situation if you hold any girl's hand, and then you can, give her a gentle massage on her hands, and you can then touch over her arms. And then there is no limit. If she doesn't stop, so you can even, on her fifth or sixth date, you can even touch on her thighs. And the day will definitely come when, the girl will feel more comfortable with you, and eventually you might even get, if you are lucky, you might even get a kiss or a smooch from her, and then she'll become your girlfriend. So this is the way to approach a girl, guys. Okay, always, touch her appropriately. Don't ever touch her unappropriately. So, if you will touch her appropriately, she will also like the way. So this is the way you should approach, and present yourself to a girl. सो गाइस, कमेंट में बिलो हाउ वाज टुडेज वीडियो. दोस्तों कमेंट करके बताओ मुझे आज का वीडियो कैसा लगा, है ना. तब तक के लिए फिर खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टेक केयर एंड गुड बाय.